assume it like it is a 1D array. Okay, तो वो 1D array के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा. देन इफ यू इंक्रीमेंट द पॉइंटर, तो ऐसा होगा कि वो नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा. ठीक है, वो जस्ट उसके जो नेबरिंग एड्रेस पे चला जाएगा. तो इफ़ यू मेक एन एरे ऑल्सो, तो अगर पहले से एरे बना दिया हुआ है तो क्या होगा कि अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हो तो वो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस इंक्रीमेंट करने पे मिल जाएगा. You know what will be the next address because array has a continuous block of memory. Yes. ठीक है. अगर वो रैंडमली ऐसे डिवाइड होता कि कहीं अगर कुछ भी 5 अलग वेरिएबल्स हैं, वो अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, वी कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम वन पॉइंटर, वी विल हैव टू नो all the 5 pointers. But array, since it is continuous, so if we increment the pointer, then we will be able to access the next element. Yes, sir. So go through that link and explanation भी इसमें अच्छे से दिया हुआ है. If you still have doubt तो हाँ पूछ लेना बाद में. Okay. Okay, sir. ठीक है, तो we'll start with today's tutorial. मैं ट्यूटोरियल शेयर कर देता हूँ चैट में भी, एंड आई विल शेयर द स्क्रीन आल्सो. सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट. Sir, I had mailed ma'am regarding this thing की tutorial sheet जो एक दिन पहले send कर दें so that we can practice it and we can ask doubts if we have any. पर मैम का कोई reply नहीं आया and I forgot to ask her yesterday also. आज. Okay, so I will ask ma'am if she can share One day day before so that earlier. we can practice मतलब. हाँ ठीक है, मैं मैम को एक बार इन्फॉर्म कर दूँगा फिर. ठीक है सर, थैंक यू. ओके, मीनवाइल अगर वीक में डाउट आता भी है तो यू कैन जस्ट send it on the Teams group also maybe. Okay, we'll try to सर figure आप out. हाँ, सर आप कौन एक बार बोल रहे हैं? सबमिशन के बारे में हृदय सर आप सबमिशन और उस सब के बारे में एक बार बता सकते हो, सबमिशन और मार्किंग स्कीम के वगैरह में. ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है ये मोस्ट प्रॉब्ली सबमिशन के लिए होगा, और तुम लोगों को नेक्स्ट हफ्ते के ट्यूटोरियल से पहले पिछले दिन, आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली वेंसडे ट्यूटोरियल होता है तो ट्यूसडे एंड तक सबमिट करना होगा कोड एंड रिपोर्ट. मूडल पे सबमिट करना होगा वो तो. ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कोर्स मेलिंग लिस्ट के थ्रू भी आ ही जाएगा इफ़ अभी तक नहीं आया अगर तो. ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट तुम्हारा वाइवा भी होगा ट्यूटोरियल में. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली पर स्टूडेंट 2 वाइवा या 3 एट मैक्स वाइवा होगा. सर रिपोर्ट और का क्या कंटेंट होगा? रिपोर्ट में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि को एल्गोरिदम क्या है इन वर्ड्स, और एनीथिंग. इफ यू हैव मेड अ excel list spreadsheet also, you can add it in the report or something. and रिपोर्ट में क्लियरली जो तुम्हारा प्रोसेस एल्गोरिदम का बस वो एक्सप्लेन करना होगा फुल. उसमें उसमें अलग से कुछ कोड स्निपेट्स मत डालना. अगर उसके थ्रू एक्सप्लेन अच्छे से हो रहा है तब डालना, अदरवाइज तुम सीधा एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो बस.
वन मोर थिंग, सबमिशन सब लोग मतलब कॉपी मत करना सबमिशन, क्योंकि मेन पेनल्टीज इसी पे होंगे। अगर किसी ने कॉपी किया होगा तो फिर उसके मार्क्स उस असाइनमेंट पे नहीं आएंगे। मेनली ऐसा होगा कि असाइनमेंट के मार्क्स होंगे एंड वी विल ऑल्सो टेक वाइवास सो दैट वी जस्ट गेट टू नो कि तुमने खुद से कर लिया है एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट एंड रिटेन द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि वो फिर आगे कंटिन्यूसली यूज़ होता जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन सबमिशन से रिलेटेड? So we have to submit 2 files. Yes, you have to submit the code and also the uh, report, PDF report submit करना है और code. So exact details, what, so I will ask ma'am to send the exact details through mail कि exactly क्या फाइल का नाम होना चाहिए, जिप फाइल बना के डालना चाहिए। तो मेनली अभी ओवरव्यू ऐसा समझ लो कि तुम्हें रिपोर्ट एक PDF फाइल बनाना है और कोड जो तुमने बनाया है वो दोनों सबमिट करने हैं मेनली, एंड उसके बेसिस पे तुम्हारा वाइवा हो जाएगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, राइट? सर एक बार सबमिशन के रिगार्डिंग वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या डाउट है तुझे सबमिशन के रिगार्डिंग? सर मतलब सबमिशन कैसे मतलब क्या करना है और लाइक कितना टेन्योर रहेगा, कितना टाइम में? हाँ, टाइम मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एक दिन पहले डेडलाइन होगी और जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उस दिन तुम्हारा वाइवा हो जाएगा बेस्ड ऑन योर सबमिशन। ठीक है, सो Yes. इस बात की मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बात का प्रॉपर मेल आई थिंक मैम सेंड कर देंगे तुम्हें, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, और अभी एक हफ्ता है तो आराम से हो जाएगा ये। So in the practical sessions, we will only give vivas, or we can also ask our doubts regarding the program we are writing. So you can ask doubts in practical. So practical is there for this thing only, and so it's tentative that I'm saying that Viva will be in practical session only. So it may happen that the TA may not get the chance to take the Viva of some people, then they can schedule later also. So Viva can be adjustable, but practical is for asking doubts and solving the tutorial. Okay. Okay. ओके, लॉजिस्टिक्स में और कोई मतलब ओवरव्यू तो समझ आ गया ना? एग्जैक्ट डिटेल्स तुम्हें मैम सेंड कर देंगी, उसके लिए चिंता मत करो। Sir, is this same as the assignment we have to do? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? So the assignment we have to submit, is it same as Tut 1? This is the same questions we have to do for assignment or other Yes, questions? this is your assignment. Okay. If you want more, we can give more. Who was that? I think it was Rohit. I think Rohit Sinha. Yes, ma'am. This is the assignment only, so it will be discussed in class and you will be also doing it in class. So if you have any doubts, you can ask. Okay, ma'am. So any more doubts from the last assignment? Last was just a practice assignment, so don't have to submit that one.
Okay, you should try the tute number 1 and think we'll wait for 10-15 minutes and then we'll try to ask people to volunteer if they can explain the question, not the code, just explain the question. Meanwhile, अगर किसी को पिछले ट्यूटोरियल में डाउट है, they can ask that also. It will be fine. No, assignment will not be discussed before submission. It probably will be discussed in the next tutorial, or so we'll figure that out. So before submission, it will not be discussed. I mean, the code will not be discussed before submission. If we'll just discuss the concepts if anyone has doubt in the concepts. Okay, the first question, Utkarsh has a doubt. So for first question, you have to find out the number of terms in the Maclaurin series, which will give the value which is correct up to eight figures after the decimal. Okay, that's what you have to do. So if you write 1 minus x square upon 2, that is 2 factorial, that is 2 2 terms. Okay, and like that you have to find out how many terms will lead to 8 correctly 8 significant figures. That means the first 8 values are matched with the actual value of cos x. So can we use the true value of cos x direct function to compare with the our code? So yeah, you have to use that only. But so what I would suggest is we'll just try to discuss the concepts only and not exact algorithm. Okay. Okay. So here the first question you have to use the cos x value to compare. सर मेरे को एक डाउट था इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं जब तक 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना आ जाए, तो जब 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाए तो हमें स्टॉप कर देना है ना, फिर तभी तक चाहिए टर्म्स. हाँ एग्जैक्टली. तो हमें फिर cos x की जो फाइनल वैल्यू है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर. Am I right, sir?
I mean, okay, so whatever you do is fine. If you can see the logic, it is fine. But we need to compute the value of cos 0.3 pi also.
Okay, so I think still people have doubt with the dynamic array. So what I will do is I will share the screen and go on to that link and then try to explain it again. Okay. So what I was quoting you, the example, the method was this method using a pointer to pointer. Okay. Dynamic array means that you are giving the space when you know that the number is going to come, and and you don't give extra space. That is the advantage from dynamic array allocation. Okay, so what they have done here is a row is 3 and then columns are 4. Okay, the first what they have done is they have defined a pointer to array, which means there is a pointer which is pointing to a address which has an address, so that it is pointing to something which is again a pointer to an uh, array variable. The variable name is array. Okay, so it is a nested pointer, if you can say that also. So they have created they have allocated a space for r into size of int. That means size of int star. That means if the row is 3, then 3 times the 3 pointers of int, uh, the memory for 3 pointers of int are allocated here. Okay, the first line is that thing. Next, what they have done for every so they have now gone to every pointer. Okay, the space which was created was 3 pointers, and the first pointer has an address which is stored by this variable, and since it is storing the address of a pointer, therefore it is a pointer to pointer. Okay, now for every row they have allocated a memory for a column, and a column contains 4 integer elements, right? So therefore they have created the malloc is used to create or allocate memory. And how much memory you need to allocate? You need to allocate memories according to the size of integer variable. But how many integer variables need to be stored in one column? So uh, so 4. Therefore they have they have allocated this much of memory. Okay, now if you do just array 4 comma array of 3 comma 4, what it will do is it will outrightly create allocate this much amount of memory when you don't know if you will be using this much amount of memory or not. So dynamic array is useful in that way. Now this pointer to pointer will behave like a 2D array. Okay, so if you write it in this format, so it will be giving the value at this position of the 2D array or matrix, whatever you can call it. And this
So this is the this is also a pointer. So this is containing the uh, containing the address of the head, or you can call it the first element of the column. So is it still not clear? I think it should be clear now. Sir, in this first question, do we have to write the value of pi till 8 significant digits? uh, I mean, you can use that also, but uh, there is specific I mean specific value, a specific variable which contains the value of pi. You can use that also. You can search for it. What is the variable in C++ or C which is used to denote pi? You can use that. Yes, sir. So do you need more time to try to solve it, or do you want to volunteer to discuss? Sir, input should be in radians or degrees. Input should be in radians, right? Okay, sir.
So anybody wants to volunteer for question 1? You will have to explain the question and the concept of truncation error. That's all. Okay. Hriday. Yes, sir. So, sir, if you can please share your screen, like if you can show the question. Okay, just give me a second. Okay, go ahead. Okay. Uh, okay. So basically here we have to write an iterative program where we have to write a code so that we can evaluate these Maclaurin series at x is equal to 0.3 pi, and at the same time we need to use that Scarborough tolerance level, and we have to check at every iteration, and if the truncation error is below that Scarborough prescribed level, so we can stop our program and say that these many terms are uh, required to find the value of cos x using the Maclaurin series. So how will you check that it has reached 8 significant figures? It has reached 8 significant figures. So we can use 8 significant figures, like if we when we use the value of pi, and when we use on everything we can use 8 significant figures. So the program will run for 8 significant figures. Like all values will contain 8 significant figures. Okay, so you are saying that if we use every value for up to the 8th decimal value, then the final output of cos x will also be in 8 decimals. Yes. So that may not be true. You just try that, and so try this thing, x equals 0.3 pi, and then truncate it after 8 significant figures, and then try to print cos x. So if we'll get only up to 8 decimals, then your hypothesis is right. Otherwise, like, you'll have to try something else. So you are getting what I'm saying, right? Okay, I will try. I'm not sure actually. I think the first thing which you said, that we'll have to use the limiting value, or the, what do you call, the error value. So if the error value goes below 10 to the power minus 8 or 10 to the power minus 7, you'll have to figure out which will be the case. So after that, I think it should give the right answer. Okay. So initially what you said, that exactly you have to do that only. Purvi, you want to ask something? Sir, yes, sir. Instead of using that Scarborough, can we just compare it with the value of cos x directly? Like the value which we get from using this Maclaurin series, and the value which is pre-stored in that maths.h library. Yes, that is also correct. So you can do that. Okay.
Sir, I didn't understand the Scarborough wala method. Like उसपे like if we put n equal to 8 in that, then we'll get the ES, that's the prescribed tolerance level. Then Okay, sorry, I was mute. Uh, so what you have to do here is you have to compare it with the actual value. Then only you can say that this is correct up to 8 figures, right? Otherwise, you will not able to say that. yes sir. cos की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी जो math.h से निकालेंगे एंड जो हम यहाँ से वैल्यू लेते हैं फिर उसको हम कंपेयर करेंगे कि 8 सिग्निफिकेंट फिगर तक सेम है कि नहीं. Right. एंड वील हैव टू आस्क कि कितने आइटरेशंस तक, कितने इटरेशन मतलब कौन से वैल्यू ऑफ n तक के बाद से ट्रू होता है. हाँ, जब 8 how, ठीक है. how many number of terms? ठीक है. ठीक. So sir, every time we'll compare it, every iteration. Yes, you'll have to compare it. Yes. Okay. Anybody wants to volunteer for the second question? Just explain the question. I think it's easier, right? Hello. Hi. Hello. Hello, Ananya. Bolo. So in second question, we can use a simple for loop and iterate it till 1,000 terms from 1 to 1,000 to calculate 1,000 terms of f of n, and then sum them, and then we can calculate the difference between the sum we got and the value that is given, matlab the value to which it converges, that is pi raised to 4 upon 90. And then we'll divide it by the same value and then into 100 we'll get the error, the relative error percentage. And similarly for the opposite one. Okay.
So do you think you will get different results? Sir, I guess not, but since it's written that explain the results, I think we will get different results. Okay, yeah. But we shouldn't get. Just think about it a bit more. Okay. Mm-hmm. So in the second question, you can even try to see the error obtained after every iterative step. So in that way, you will be able to understand that exactly at which point it is going near to the true value. Okay. So this will be helpful in probably doing the analysis and making the report. Also, these questions are very easy. So if your insight is saying that what you think first time for the question, that may be right. So don't overthink on easy questions. You might get it wrong. Anyone wants to go for third question?
So I have a doubt in third question that at the end of the program we have to print the values of true percentage relative error and approximate percent relative error, right? Or do we have to print something else? Yes, you have to print those two values. Yes, true percent relative error and approximate percent relative error. So I think So if it's a function of iterative steps, so should we print it at every iterative step, or yes, I mean, yeah, that will be better to understand how is it changing if you print it after every step. okay, sir. So I guess you guys know, so the true percent relative error and approximate percent relative error. So third question should be very easy then. Okay. I don't, is there any need to discuss? Okay. Sir, I had a doubt in first question in some other scenario. Like over here, we can use truncation error because like truncation error basically says कि एक point के बाद हम आगे वाले significant figures को देख भी नहीं रहे हैं और हम वहीं पर chop off कर रहे हैं literally, है ना? So if over here it's cost, so that's why the value would lie from -1 to 1. So number of significant figures would be 0 point something of order. So it'll be easy to see कि अगर 10 power -9 से आधा का फर्क पड़ रहा है, मतलब कि of that order में फर्क पड़ रहा है, तो फिर it would be wrong और हमें और ज़्यादा significant figures चाहिए. पर अगर tan या ऐसा कोई फंक्शन हो रहा होता जिसका हम ऐसे कर रहे होते तो उसमें तो हमें significant figures ऐसे 10 की पावर में तो कहीं कंपेयर करना I don't think उतना सही होगा. क्या कमेंट है आपका उस पर? I didn't get your question. एक बार clearly बताना. सर कॉस्ट में बिकॉज कॉस्ट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रेंज ही कर रही है, तो जब आप सब्ट्रैक्शन लोगे दो जो हम लोग कॉस्ट का फंक्शन बनाए हैं और जो ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन होगा जो हम लोग मैथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग की जो वैल्यू होगी हम उसको चेक कर सकते हैं कि 10 पावर माइनस कुछ एक ऑर्डर होगी 10 पावर -8 या 9 की, हम उस तक चेक करेंगे कि अगर इतना सही है, डिफरेंस उससे कम है तो मतलब उतना एक्यूरेट है ना? बट अगर tan फंक्शन होगा तो उसमें तो वैल्यूज इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा हम लोग एक tan का फंक्शन बनाएंगे और जो ओरिजिनल फंक्शन होगा तो उसमें जो एरर मतलब उसमें जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो ऑर्डर ऑफ द एरर देखेंगे कि कितने पावर तक ये सेम जा रहा है, तब तो आई डोंट थिंक कि ये मेथड सही होगा, क्योंकि बिकॉज देन इट्स नॉट दैट नेसेसरी ना कि जो ऑर्डर से हम चेक कर पाएंगे कि कितना एरर है, क्योंकि -1 to 1 में तो सिर्फ 0 पॉइंट समथिंग है तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स ही देंगे, बट 1 पॉइंट उसमें तो नहीं कर सकते ऐसे, मतलब अगर 1 से बड़ी वैल्यू हो तो 1 से बड़ी वैल्यू है तब नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? I was just imagining a case. I'll give you two numbers and I'll tell you probably. मतलब tan इन्फिनिटी तक जा सकता है बट कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जहाँ तक होगी वहाँ तक स्टोर करेगा. एंड सो यू विल नॉट बी आस्क्ड कि what is the storage capacity of this computer, or so if the same question is asked for tan and if the formula is given for tan, so you can do in that way also. आपके हिसाब से उस मेथड से फिर भी आंसर सेम ही आएगा? I mean tan, हाँ tan so something like I'll give this example. अगर because we don't know कि कौन से x की वैल्यू पे हमें कंपेयर करना है, it can be any x values and suppose it's in the range of what computer can calculate. So अगर x equal to 1 है और मतलब कि बेसिकली x की ऐसी वैल्यू पे अगर tan का एक आंसर है जो सपोज ऑफ द 10 यूनिट्स के ऑर्डर में, मतलब कि 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 से होगा स्टार्ट और फिर डेसिमल आ जाएगा और फिर उसके बाद बाकी जिन्हें अगर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए तो डेसिमल के बाद 7 पॉइंट्स तक हमें एक्यूरेट होना पड़ेगा, है ना? पर अगर हमारे पास कोई नंबर है जो 137,000 कुछ है, तो फिर पहली से इतने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ आ गए हैं, तो जो ऑर्डर होगा
हमें उससे हम डायरेक्ट चेक नहीं, हम 10 पावर माइनस कोई एक्स नंबर दे ही नहीं सकते जिससे हम चेक करेंगे कि यहाँ तक सही होना चाहिए, क्योंकि इट विल चेंज फॉर एवरी काइंड ऑफ एक्स। cos में it is Okay, possible okay. because I get cos it. की जो वैल्यू है, did you get my point? ठीक है, मतलब exactly we are not giving we are not representing every value of cos in some power of 10 to the power x, right? We are actually writing the value of cos. We are just giving the tolerance value कि कहाँ किस tolerance तक हमें चाहिए. तो if we give it in tan also, अगर tan एक terminating decimal होगा तो फिर अगर हमने पूछा 8 तक और वो टर्मिनेट कर रहा है 4 पे, तो तब तो मतलब बाकी के सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे ही नहीं, बाकी के डिजिट 0 होंगे, तो फिर इस क्वेश्चन का कुछ मतलब नहीं बनता. बट इफ़ इट इज़ रकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, तो फिर इस क्वेश्चन का मतलब बनता है कि कितने वैल्यूज़ के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली कैलकुलेशन करना है ना तुम्हें इसको किसी बड़े प्रॉब्लम में. तो जस्ट फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हाट यू विल डू इज़ कि बड़े प्रॉब्लम में कैलकुलेशन के लिए तुम्हें ये वैल्यू चाहिए होगी. अब किस वैल्यू के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किस डेसिमल पॉइंट के बाद तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि मुझे और चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर भी अगर स्टोर कम कर रहा है तो दैट विल बी फास्टर. दैट इज़ ओनली द पॉइंट. एंड डेसिमल के बाद ही जनरली हम पूछते हैं कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो रही हैं. ओके फाइन, ये ठीक है, देन इट मेक्स सेंस. ओके सर, डेसिमल के बाद वाला कोई डाउट, मतलब क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे, तो फिर हम एक नंबर पे अगर सिर्फ राइट हैंड साइड को देख रहे हो फिर तो हाँ काफ़ी फिर पॉसिबल है. ओके सर, थैंक यू. Sir, hello. हाँ बोलो. Sir, you asked me a question कि आप कैसे इंश्योर करोगे कि 8 significant figures आ रहे हैं. So can we use set precision in IO manipulator file? Yes, you can use set precision. Okay, so उससे हो जाएगा. So एक logistical problem है कि in the first 6 question, significant digits ही cover कर रहा है. एक बार रिपीट करना. So 6 significant digits ही cover कर रहा है flow जो डबल फॉर्मेट में है, मतलब सॉरी फ्लोट फॉर्मेट में है cos x का फंक्शन C++. डबल यूज कर लो. तो उसको कन्वर्ट कैसे करें, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन तो उसी में है, मतलब वो
उसको कैसे बढ़ाएंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को? तुम क्वेश्चन क्या है? फ्लोट 6 तक ही मतलब कवर कर रहा है। cos x जो math.h में है फंक्शन, वो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही बता पर। आई थिंक अगर तुम डबल करोगे तो 6 से ज़्यादा बता देंगे। डबल cos x डिफाइन करिए। फर्स्ट में नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B में किसी को डाउट है क्या कुछ? सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे एक लेक्चर 3 PDF में है। दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, आई गेस 3 या फिर 4 था, एक बार चेक कर लेना। But ma'am has covered this concept already. This divide and average method. Okay, and the true percent relative error and the approximate percent relative error have also been explained in your class. If you still have any doubt, you can ask. Are you all trying these questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें कंपेयर करना है वो हमें cos 0.3 पाई की ट्रू वैल्यू से कंपेयर करना होगा। हाँ। ठीक है। मैम C++ में ये पाई यूज करने का कोई डायरेक्ट ऐसे सिंटैक्स है क्या? मतलब पूरा गूगल सर्च करके देखो। तो मुझे जितना याद है शायद से था C++ में होता है एक्चुअली है, तो होता है, तो एक बार गूगल कर लो। ठीक है। हाँ। Also from the next lab we will be having vivas. Okay, do you guys know when you have to submit this tutorial sheet? Tuesday, midnight, I guess. Yes, yeah, even I think so. Tuesday midnight would be the deadline. Like before this due, you have to submit it. So on Wednesday, on the day of the lab, we will be sharing a list of the students who will be having their vivas on that day. Okay, the list will be shared in the first half in the Teams channel itself. Okay, so please do check it. And for vivas, you have to explain your code, and we can also ask some of the questions based on the things that have been covered in the lecture related to that tutorial sheet. And in case any student is not available on that day and he or she has been allotted a slot for the viva, okay, then you have to inform us timely so that we can reschedule your viva and someone else can take your place. Also for those like whose name will not be there on a particular day, like it is not like only the people who have to give the viva have to attend the lab. Every student has to attend the lab, and the attendance is being taken down on a regular basis. Okay, it's not like you just joined for the first 15 minutes and then you left. Okay, then your attendance will not be considered.
So simultaneously, we will be taking doubts for the tutorials. Like in the next lab, we will be having doubt session for the tutorial sheet 2, and simultaneously Viva will be going for the tutorial sheet 1 and the course that you have submitted. Is it clear? Yes, ma'am. Sir, I had a doubt in second question. Like I have written the code and the final I have printed the value of fn using the series and pi to the power 4 by 90 and the error. So the error came out to be around 8%. So is it okay or is there a limit to the error? Yeah, whatever you do is fine, I think. You just have to explain your logic, that's all. And sir, till how many significant figures do we have to print the value of fn? Or is there no such limit? Generally, you can take tolerance of like 10 to the power minus 5 or 6. Generally, you can take these values. Okay. Since all three questions have been discussed, we can wait for 10 to 15 minutes more if anyone has any doubt. Okay, then we may end the session if there are no more doubts after 15 minutes.
सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन 3 में टॉलरेंस अप्रॉक्सीमेट एरर की है या ट्रू एरर की है? दोनों के लिए सेम ले लो। यानी दोनों का मैक्सिमम जो होगा, दोनों में जो बड़ा होगा वो इससे होना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं मतलब टॉलरेंस सेम ले लो दोनों के लिए, मतलब कितने के बाद फिर तुम कितने डिजिट्स के बाद ज़रूरत नहीं है लेना फिर, ठीक है। ओके सर। जो क्लास में एग्जांपल कराया ना, उस एक बार वो टेबल देख लो और फिर उस वैसे ही तुम्हें बनाना है। हाँ ठीक है। अच्छा, just one more thing, just wanted to take feedback की, so is this discussion of questions is okay, or you just want to ask any doubt you have? What is your take on that? So whatever you are comfortable with, we can continue with that format from the next tutorial. तो कौन से दो फॉर्मेट्स की बात कर रहे थे? एक डाउट पूछना, दूसरा मतलब क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करना किसी को सही लगता है, या फिर सीधा डाउट्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली वो पूछ लो? दोनों दोनों ठीक है इसमें। चलिए क्वेश्चन करके क्वेश्चन डिस्कस कर लें, मतलब आपका सम टाइम ठीक ही है, मतलब किसी और को कुछ बोलना बोल सकते हैं। ठीक है फिर। ओके हाँ ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग। सर हेलो। हाँ बोलो। सर इसमें मैंने एम पाई जो दिया था सिंटैक्स, उसमें पाई की वैल्यू लेने के लिए वो वर्क नहीं कर रहा था। जिस और जो मैथ के लिए डिफाइन करते हैं ना, हैश डिफाइन, यूज मैथ डिफाइन, ये भी मैंने कर दिया है तो भी नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहे हैं। पाई की वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच कर दिया। हैश इंक्लूड ब्रैकेट में होना चाहिए मैथ डॉट एच। हाँ
किसी को भी अगर मतलब डाउट्स के बारे में आंसर्स पता है कि क्या है, तो हाँ इस तरह से चैट में डाल दो, बेटर रहेगा, कोलैबोरेटिव हो जाएगा। बट कोड अकेले अकेले करना बस, ठीक है। Hello, sir. Double float is working. Sorry, float is working, but double float is not working. While writing float a equals to this m underscore pi, it is giving up to 5 significant figures after the decimal. And using the double float, it is unable to give. It is giving error. Yeah, I mean, double float are two different types. You can try using only double. Can you repeat, ma'am? I don't remember exactly what sir has replied to you, but you can try using only double, not double Okay. float. साथ में. Okay. Also, guys, for the reports, I forgot to mention it before. Okay, since like you will be for some of the questions, you will be printing out the values for each iteration. Okay, so it would be better if you could create an Excel sheet and make a graph. Okay, and then you can this would help you in analyze. Okay, and you can also submit it in the folder that you will be submitting on the Moodle, like, as a report. Other and the remaining details will be shared on the email. We will get in touch with the ma'am and then we can discuss the format of the report that has to be followed. But this would be better if you could like make graphs of the iterations, like the like for one of the questions. Yeah, like the percentage true error with the number of iteration and these kind of graph if you could make. And even your understanding would improve. Okay, you can see like with the number of iterations how the percentage error is coming and okay, and like for all three parts you can do that. Okay. Ma'am, checking will be manual or you will be using test cases? There will be some test cases.
Okay, ma'am. Ma'am, in my second question, I have written the code for increment and decrement, but in both the cases, the error is same. So, I mean, it can be the case that the error will remain same. It might be the case. Okay, I'm not sure. I haven't performed this code. Okay, but yeah, you can just check it on your own, because even this is the question that has been asked. Like, you have to explain your results. Okay, so I can't answer it. We can discuss it in the next lab when you are done with your submission. okay. And would you suggest any method like which would be permissible to be used to check if our answers are correct or not? With your experience, like do you know I mean, any? we used to discuss it in our group only. Like, Alright. what is the range of error that other students are getting? Though this tutorial is a bit easy, okay, but it would be better if you finish the course early, okay? Because even I remember, even in my first assignment, like this, like so, like the question was simple because the syllabus is same, okay, but like once you discuss like the percentage error that other students are getting, you can just discuss this only, okay? Please don't discuss the code. Okay, ma'am.